Alright, so before we get started, I want to talk about the One Football app, which is my go-to football app for all of my footballing needs. To be very honest, if I have to know about any news about my favorite teams, my favorite leagues, I will go to the One Football app. It contains lineups for all of my matches. It also gives me updates about my favorite players, by the way, because all you have to do is just click on the bell icon on top of your favorite players and you will get real-time updates about when they score a goal, when they give an assist, or when they are involved in a team which wins a particular game. So what are you waiting for? Just download the One Football app from the link in the description below. Hi guys and welcome back to another episode of Adi Dev's Gurugyaan. बहुत टाइम बाद में लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक एपिसोड. आई थिंक सो 3 दिन हो गए. ठीक है, और मैं ये वीडियो एज सून एज इट इज रिकॉर्ड में डाल दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मेरे फॉलोअर्स के नंबर भी कम हो रहे हैं यार. शिट यार. बट एनीवेज, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू अनदर रिव्यू ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल. बिग चैंपियंस लीग फाइनल आप लोग देखोगे, आपको मेरे थॉट्स के बारे में जानना होगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे थॉट्स उतने अलग शायद ना हो टू व्हाट अदर्स हैव स्पोकन अबाउट. इसलिए मैं वही सेम चीज़ आपको वापस नहीं बोलना चाहता. अगर आपको कमेंट्स है वो फाइनल के बारे में आप डाल सकते हो नीचे एंड देन प्रॉब्ली वी कैन डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, पर मैं अभी बात करना चाहता हूँ अबाउट अ प्लेयर जिसके वजह से जोजे मरीनियो की जो रेवोल्यूशन है अंडर रोमा, दैट हैज वर्कड आउट अ ट्रीट, दैट हैज वर्कड एज अ ट्रीट. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स टॉक अबाउट टैमी एब्राहम. ठीक है, नाउ जब आप टैमी एब्राहम के बारे में आप सोचते हो, व्हेन यू गो बैक टू हिज चेल्सी डेज, यू थिंक दैट ओके फाइन, ही इज टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शॉट्स. ठीक है, व्हेन ही इज ऑन द पिच ही इज टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शॉट्स. थोड़े पोचर टाइप उनका प्रोफाइल है एंड यू आर नॉट रॉन्ग, ही स्टिल कंटिन्यूज दैट पोचर प्रोफाइल इज स्टिल देयर. बट if you notice in Roma, the number of shots that he takes per 90 is 2.71 shots per 90. This is all of the numbers that I'll quote right now is from FBref. 2.71 shots per 90, which is around the average mark in the Serie A, but it is significantly lower than जो उनका शॉट्स पर 90 का स्टैट था एट चेल्सी फॉर द 1920 सीजन. दैट वाज इट वाज 3.58 शॉट्स पर गेम. ठीक है, दैट वाज हिज स्टैट. ओके, नाउ यू कैन चॉक इट डाउन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, कि ये इतने कम शॉट्स क्यों ले रहे हैं. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि इतने कम शॉट्स क्यों ले रहे हैं. यू कैन चॉक इट डाउन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स. इज दैट दिस टाइम अराउंड ही हैज अ लॉट ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. ठीक है, क्योंकि अभी अगर टैमी को वो पोजीशन पे आप रोमा रोमा में देखते हो तो उनके क्रिएटिव नंबर्स भी थोड़े बढ़े हैं, जो है उनकी की पासेस पर 90. नाउ दीज की पासेस पर 90 का जो मेट्रिक है उनका हाईएस्ट है इनके करियर में सो फार, दैट इज 1.02 की पासेस पर 90. अगेन काफी एवरेज है सेरे आ में. ठीक है, बट पर्सनली स्पीकिंग टैमी भी इज एट एन एज वेरी स्टिल डेवलपिंग. सो this thing getting added into his armory is a huge what do you say bonus for Tammy when he probably has to shift clubs from Roma to somewhere else and to develop his game a little bit more. ठीक है, तो आपका वो क्रिएटिव नंबर्स की बात हो गई. एंड और एक चीज भी थी कि व्हाई ही इज नॉट टेकिंग टू मेनी शॉट्स इज बिकॉज रोमा इज नॉट एग्जैक्टली अ पोजेशन लेड टीम. ठीक है, वो क्विक ट्रांजिशंस पे खेलने को ट्राई करती है. ठीक है, एंड आपका अभी कोई बोलेगा ठीक है काउंटर लगा दो, बट काउंटर लगा दो. आई थिंक मैं ठीक है काउंटर भी लगा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, बट possession, Roma is not a possession led team. Roma averages around 50% possession in this area, just above 50% possession in this area. And the difference between Roma and Frank Lampard's setup, where Tammy flourished a lot, ठीक है, Frank Lampard's setup was कि Frank Lampard patiently build up करते हैं back से, which allows a lot of players to come into a phase of play and allows the striker to get the ball more often than not. Another thing here is that Tammy mostly plays as a part of a two-man striker setup with Pellegrini. और पेलेग्रिनी को भी बहुत सारे चांसेस मिलते हैं. सो एंड विथ चेल्सी ही यूज्ड टू मोस्टली बी दैट लोन स्ट्राइकर अप फ्रंट. सो ही वाज द मैन टू प्रॉब्ली स्कोर द गोल्स.
So these are some factors that contribute to the fact that he's taking lesser amount of shots, but the responsibility on Tammy Abraham has increased. ठीक है, वो हम as we go forward in this player profile, we'll discuss about that. पर और एक जो चीज थी जो मैं बोलना चाहता था कि वो थी उनकी नॉन पेनल्टी एक्सजी. नाउ नॉन पेनल्टी एक्सजी, फॉर दोज हु फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड, हम एक्सपेक्टेड गोल्स जब बोलते हैं, एक्सजी जो होती है, एक्सपेक्टेड गोल्स जब बोलते हैं, तो वो होता है कि अगर आपने कोई शॉट लिया है, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है अंदर जाने का. सो अगर आपने कोई पेनल्टी बॉक्स के अंदर शॉट लिया है और उस वो गोल में गया नहीं, पर उसकी एक्सजी हायर होगी देन अ शॉट दैट यू हैव टेकन आउटसाइड द बॉक्स, राइट? दैट इज how you probably define xg in loose terms. Non penalty xg is जहां आपने, where penalties are not included. ठीक है, where penalties are not included. सॉन की नॉन पेनल्टी एक्सजी इस सीजन बहुत अच्छी रही है फॉर द प्रीमियर लीग, एंड आई थिंक जो गोल्डन बूट भी मिली है, द नंबर ऑफ गोल्स दैट ही हैज स्कोर्ड दिस सीजन दैट डजंट इंक्लूड पेनल्टीज, नॉट टेकन अ सिंगल पेनल्टी, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड जब आप नॉन पेनल्टी एक्सजी टैमी पे भी आएंगे, it is currently 0.53, and he finished the season with 0.53. But at one point of time, he was higher than Duvan Zapata and Lautaro Martinez in that non-penalty XG category, which is absolutely huge. Right now, he is third in the list of non-penalty XG in the Serie A. That means that जो poachers ability के बारे में जो बात कर रहे थे हम, that is, that can be defined by these stats, by this particular stat a little bit more, because he doesn't rely on penalties much. He relies on his own ability to run past the shoulder of the last defender, और body feints, इसके बारे में ही बात करेंगे थोड़ा और, ठीक है. बट जो पोचर की जो क्लिनिकल एबिलिटी होती है उस पे, और जो अपने लिए चांसेस क्रिएट करने की जो एबिलिटी होती है उस पे टैमी इब्राहिम उतरते हैं, ठीक है. क्लिनिकल एबिलिटी, ऑल्दो आई विल नॉट से दैट ही हैज दैट, ठीक है. ऑल दी अदर एबिलिटीज ऑफ अ पोचर ही डज हैव दैट. क्लिनिकल एबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैमी एब्रम जितना क्रिएट करते हैं ना अपने लिए, क्योंकि एक्सजी में मोस्टली वही सब चीजें आती हैं जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब शॉट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो. ये नहीं है कि भाई शॉट अंदर चली गई, गोल के अंदर चली गई तो ही आपका एक्सजी कैलकुलेट होता है. अगर शायद अपने पेनल्टी से, ठीक है, आपके बैंक फ्रॉम द सेंटर, ठीक, बैंक फ्रॉम द सेंटर, not from penalty, but bang in the center of the penalty box. You have taken a shot, but it has been blazed over the bar. आपकी एक्सजी फिर भी बहुत हाई होगी. तो ये सब चीजें टैमी इब्राहिम बहुत करते हैं. टैमी इब्राहिम एंड स्पेस गो हैंड इन हैंड. वो अपने लिए क्रिएट करते हैं बहुत अच्छी तरह से स्पेस. पर सीन यह है कि टैमी इब्राहिम इन द पास्ट 3 seasons has not been very clinical. The amount of chances he has created for himself, or the amount of chances he has got for himself, he has kind of underscored. These stats are great. He has scored a lot of goals this season, and but the amount of chances that he has created for himself, I think he should have been able to score a lot more. Fourth highest scorer with 15 goals is great, but he could have climbed a little bit higher in the ladder. That I think is the next step for Tammy Abraham. But coming back to how he creates those spaces, तो अब मैंने जैसे बोला कि एब्राहम एंड स्पेस को हैंड इन हैंड, तो एब्राहम के पास ना बहुत क्लीन रिसीविंग स्किल्स है which aid him when his back is to his goal. But thanks to his quick feet, he pins the defender and he can create separation from the opposition defender by shifting the ball past him. From there, Abraham can shoot at goal, and Abraham के पास बहुत clean ball striking ability भी है. So ये जो clean ball striking ability है ना, ये clean ball striking ability can be compared to Harry Kane, जहाँ पे दोनों kind of wish to pick out the bottom corner more often than not. सो दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ ही क्रिएट्स स्पेस फॉर हिमसेल्फ, ठीक है. एंड द अदर फैक्ट इज हाउ ही इज स्टिल, you know, he is coming deep to get the ball. Now there is also a stat that
रोमा की इंडिविजुअल टीम में the amount of touches that Tammy takes is the second least amount of touches in the whole team, like after Rui Patricio. That is a damning stat. But अगर आपने matches देखे होंगे, the times when Tammy Abraham comes deep to receive the ball are very productive, are extremely productive, and he doesn't have to come deep all the time, because as I said, most of the time he plays in a double striking partnership with Pellegrini, and Pellegrini is kind of the one who makes things click for him, for Tammy as well, and also for others around him in terms of inside forwards. So but जब टैमी बिल्डअप के लिए आते हैं, तो जैसे मैंने बोला, उनकी की पासिस का स्टार्ट भी बोला, so these are some things he does a lot when he comes deep to actually build up the play. Now Tammy has a 6'3", 6'3" height. He has a slim build, but Tammy has really good upper body strength to shield the ball from the opposition. He is acrobatic, capable of producing a lot of magical goals, but his upper body strength is what counts a lot more when you're coming deep to get the ball, because you can shield the ball aram se, and you can also win the ball if Rui Patricio has punted the goal kick, and if there is a defender who has made a clearance, if there's Roma defender who's made the clearance, Tammy Abraham can win those first balls with his upper body strength, okay, or get a tactical foul by using his upper body strength. That is something that he has done for Roma as well. He can also run the channels effectively, because he's done that for Chelsea and is continuing those traits for him for Roma, and his in behind runs have improved for Roma. He used to bend his runs a lot for Chelsea, and his in behind runs have improved for Roma, because right now आप अगर Zaniolo को भी उसके साथ पे डाल दो, ठीक है, तो Zaniolo is also a creator, so that works a lot for both of them, because you have a balance. Tammy Abraham, a poacher, and Zaniolo could be called like an advanced forward, or if I could be bold enough, a complete forward without that upper body strength that you would require from a complete forward like a Zlatan in the prime. But Zaniolo is that person who's an excellent creator and who has a clinical ability as well, जो हमने कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में भी देखा. So ये पार्टनरशिप है, that is why it works really well, because जब इनको इन बिहाइंड रन करना रहता है, द पार्टनर नोज कि भाई मुझे इस टाइम पे एक वेटेड थ्रू बॉल देने का है, एंड वेयर डू आई हैव टू गिव इट. और एक चीज जो है, जब ये सब पार्टनरशिप के बारे में बात आती है, तो और एक चीज मैं मेंशन करना चाहता है कि टैमी एब्राहम ये भी नहीं है कि मतलब ही ऑलवेज कीप्स रनिंग to create space for himself and drag defenders away. He doesn't do that. Sometimes he just stands in a phase of play. Sometimes he just stands in a phase of play to catch his opposing defender by surprise. क्योंकि तब ना opposing defender ने तब तक देख लिया होगा पीछे कि भाई टैमी एब्राहम कहाँ पे है. All right. And Tammy Abraham at a point of time just stops. So the opposition defender is continuing in his own merry way. ठीक है, thinking that Tammy Abraham is traveling with him. ठीक है, and he's covering Tammy Abraham. So if I am Tammy Abraham and there's an opposite defender who's watching me, he has watched me here, all right, and मैं ऐसे भागा भागा भागा, but this guy moves a little bit forward, thinking that if there's a cross coming from the right hand side, and if the cross is aimed for the near post, ठीक है, this opposition starts to cover the near post, ठीक है. I am thinking, but I stand still, all right. I wait for the space to be created in front of me, okay, by that opposition defender, and let's say a center back who's on my left hand side. All right. I stand still at one point of time in the penalty box, and I make that like one sudden burst once the ball is delivered. And that is the darting in behind run that I'm talking about. Those blind side runs, he has improved on it. So that is something that he has acquired, and the speed with which he does it, as I said, that is something he has acquired. और एक चीज जो बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि जब हम रोमेलू लुकाकू के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े ऐसे टारगेट मैन्स के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि they should have good feet. Right now रोमेलू लुकाकू के ऊपर बहुत सारे आर्गुमेंट्स आ सकते हैं, but when I'm talking about his interstint, we are talking about the fact that he has really good feet.
All right, his touches are really nice. Abraham के touches भी improve हो गए हैं since coming to Roma. All right, his winning the first ball is not up to his up body strength as well, but when the ball when he receives the ball to feet, as I said, he has a very clean receiving wala. uh, he receives the ball very cleanly. First touch is excellent. That is how Abraham that's what Abraham को बहुत help करता है when it comes to building up. All right, now हम जब, as I said, I'll come to this later, but now we'll probably talk about his some more stats in terms of build up, right? 1.03 key passes per game. When it comes to starters, this is an average number in this area. 2.49 shot creating actions per match. That is excellent for a striker. And वही बोल रहा हूँ कि now he has become a cross breed between a striker and a playmaker. All right, that is something that he has taken up. और तीन चीजें, हाँ, तीन चीजें जो है टैमी इब्राहिम के बारे में, वो है कि ही व्हेन ही कम्स डीप, ही हैज दिस एक्सीलेंट 1-2 प्ले करने का एक ability that he uses to the highest effect. When he comes deep, there are Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, ऐसे सब प्लेयर्स हैं जो उसको वाइड में उसको क्या बोलते हैं, पासिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं. तो दीज आर real quality players in this area right now who provide provide those options. So that exactly pins the defender पीछे, that exactly pins the backline picture, because they can't commit to closing down these wide men, because these wide men are also very much capable of creating something for themselves. And they also can't exactly close up on Abraham, because then these wide men would be able to go into that particular space that opposition defender who is closed up on Abraham will vacate. तो डिफेंडर स्पिन हो जाते हैं पीछे. एब्राहम के पास बहुत ज्यादा स्पेस आ जाती है टू जस्ट रन इनटू द ग्रीन्स, डायरेक्टली रन इनटू द ग्रीन्स. बहुत डायरेक्ट रनर भी हो गए हैं एब्राहम, तो और पासिंग ऑप्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं. एंड राइट नाउ ही द वेट दैट ही पुट्स इनटू पासेस एज वेल इज वेरी नाइस. सेकंड चीज जो इब्राहिम और एक चीज करते हैं, जो मैं तीन चीजों से बोल रहा था, ये मैंने एक चीज बोल दी कि जो पासिंग ऑप्शंस बोलते हैं, इब्राहिम पिक्स आउट दोस पासिंग ऑप्शंस रियली वेल. सेकंड चीज जो करते हैं कि जब हम शील्डिंग के बारे में बोलते हैं ना, तो इब्राहिम की हमने अपर बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में तो बात कर ली, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिम शिफ्टिंग अवे, दोस those sharp shifts from the defender that Abraham does is also very important when he's facing the defender as well. ठीक है, the sharp shifts that he does is very important. Sometimes these are false feints as well. For example, if you can see, रुक जाओ मैं, हाँ, if you can see, this is the opposition defender. ठीक है, now if I'm here, all right, opposition defender thinks he has covered me. ठीक है, पूरा full face to face, opposition defender thinks he has covered me. I make a slight, मतलब my left leg makes a movement, makes a small movement, all right, and मैं ऐसे left की तरफ थोड़ा bend करता हूँ, तो opposition thinks that I'm going towards the left. ठीक है, उसी टाइम पे उसी टाइम पे मुझे पता है कि राइट पे स्पेस क्लियर हो गया, एंड आई मेक अ डार्ट टुवर्ड्स द राइट. Abraham does this. And this is how he again creates space for himself. And this is something he has excelled in at Roma currently. And again, when he does this, a lot of options open up for him open up for him in those channels where there are people running into those channels, and he can pick any of them at will. तो ये सब चीजें जो हैं रोमा के लिए एब्राहम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. एंड आई थिंक that is something that every Chelsea fan should be happy about, because when he left us, we were just thinking that okay, fine, we should have kept him, but if he is going to Roma, I just hope Jose Mourinho transforms him into a beast. And I think he has, pretty much. I really think he has, because fourth highest scorer with 15 goals in your first Serie A season. That is absolutely amazing. I wish all the best to Tammy Abraham.
and I think we have more. I just hope we have more to talk about him in the upcoming videos. So thanks guys for watching the video. Please do hit the like button. Please do hit the subscribe button. And let me just tell you that I'll not be coming as frequently as I was before, because मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा स्टेल जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन जा रहा है. तो आई ट्राई टू ब्रिंग कंटेंट विच इंटरेस्ट्स यू अ लॉट मोर, ऐसे सब टैक्टिकल साइट्स के बारे में थोड़ा और मैं बात कर पाऊँ, ठीक है, थोड़े अननोन प्लेयर्स, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगा. शॉर्ट शॉर्ट की मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ है मेरे दिमाग में. प्रीव्यूज रिव्यू से थोड़ा मैं दूर रहना चाहूँगा. यस, आपको आज रात के मैच का रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है, पर प्रीव्यू मैं नहीं करना चाहता बिकॉज मैंने सोचा प्रीव्यू बहुत हो गया. सो आई थिंक ये सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा. इनके लिए टाइम लगेगा, एवरी वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो प्लीज़ थोड़े पेशेंट रहिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस हैज बीन आदिदेव गुरु एंड कीप वॉचिंग आदिदेव्स गुरुज्ञान. चीयर्स बॉयज.